history class. So we were studying the first chapter of history, that is sources of history. So we saw that there are three sources of history, that is material, oral, written, and one more new is added, that is audiovisual source. So in that, before going further, we will revise in short. In that we saw material source, in which building and places we saw, statues and memorials we saw. So now we are going to see the next source, that is the return source. Before that, let me remind you about the homework I have given you. You can see on page number 2, the blue box, do it, stress out the statues. That wala homework I had given you. I hope you all have done it. So now let's move, without wasting time, let's move further. So now we are going to study the second source, that is the return source. Now see students, with the word itself you get to know what do you mean by return source. Return means what? लिखी हुई चीज़. Yes. So कुछ भी documentations या पेपर वर्क जो लिखी हुई फॉर्म में है, जो रिटर्न फॉर्म में है, वो आता है रिटर्न सोर्सेस में. नाउ सी दैट टेबल गिवन देयर. इन दैट टेबल व्हाट आर द थिंग्स, कौन से थिंग्स है? करस्पॉन्डेंस, फॉरेन अकाउंट्स, न्यूज़पेपर्स, बायोग्राफीज, पीरियोडिकल्स, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, autobiographies and books. These are the things which come under return sources. Yes. Now let us see each thing in detail. First is newspapers and periodicals. Now the difference between newspaper and periodicals is, newspaper is a thing which you get every day on daily basis. Yes, daily basis you get a newspaper, every day a new newspaper. Periodical is like, it is a type of magazine or a paper which comes only at a certain interval or at a certain period of टाइम. जैसे कि 3 महीने में एक बार छपता है, या फिर 6 महीने में एक बार, या फिर साल में एक बार, डिपेंड्स. उसको पीरियोडिकल्स बोलते हैं बिकॉज वो रोज़ नहीं आता है, सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे ही वो छपकर आता है, उसको पीरियोडिकल्स बोलते हैं. नाउ न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स. along with it, detailed analysis of a particular event, views of eminent people, editorials are also published. We get information about the political, social, economic and cultural happenings of that period. In the pre-independence period, newspaper like in the pre-independence period, newspaper like Jnanoday, Jnanaprakash, Amrit Bazar, Patrika, Deenabandhu and Kesari acted as important sources of awakening the minds of the people. So here they are telling that newspaper really played a very important role in the pre-independence period. Pre-independence मतलब independence के पहले, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है न्यूज़पेपर ने. एंड दे हैव गिवन द सम ऑफ द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर. ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, दीनबंधु एंड केसरी. ये कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम थे जिन्होंने लोगों की अवेकनिंग द माइंड्स मतलब आंखें खोलना, लोगों की आंखें खोलने में, जागृति लाने में बहुत मदद की है. Through the newspaper, we can study the British policies regarding India and their effects on India. During the British period, newspapers were not only the source of political events but also acted as a source of social reformation. So newspaper ने सिर्फ न्यूज़ देने का ही काम नहीं किया है, लेकिन इज एक्टेड एज अ सोशल रिफॉर्मेशन. जैसे कि ये जो सोशल रिफॉर्मर थे, उस तरीके से न्यूज़पेपर ने एक सोशल रिफॉर्मर बनकर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिपेंडेंस मिलने के लिए काम किया है. द निबंध माला बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर and
शतापत्रे written by Lokahitavadi alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues. सो द निबंधमाला करके भी एक था जिसने विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने लिखी थी. बाय मीन्स उन्होंने वो लिखते थे. देन शतापत्रे रिटर्न बाय लोकाहितावधी. तो शतापत्रे लोकाहितावधी लिखते थे alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues. Next, now let us know Dr. Babasaheb Ambedkar and newspaper. In January 1920, Dr. Babasaheb Ambedkar started the fortnightly Mook Nayak, but later Dr. Ambedkar had to leave for higher studies to England and hence he handed over this paper to his colleagues. So 1920 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूक नायक करके एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, न्यूज़पेपर पब्लिशमेंट शुरू की थी, लेकिन बाद में उनको इंग्लैंड में जाना पड़ा. इसलिए उन्होंने क्या किया, वो न्यूज़पेपर की सारी जिम्मेदारी, सारा कामकाज अपने कलीग्स मतलब एक साथ काम करने वाले लोग, अपने कलीग्स को दे दिया. देन in April 1927, Dr. Ambedkar started the newspaper Bahishkrut Bharat. Through the medium of Bahishkrut Bharat, he wrote for the reformation of common people and bringing unity among them. Apart from these, he also started two more newspapers, namely Janta and प्रबुद्ध भारत. सो फिर जब 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत करके न्यूज़पेपर चालू किया एंड देन कॉमन लोगों को ऊपर उठाने के लिए और लोगों में एक एकता आने के लिए, यूनिटी आने के लिए. एंड देन अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी ही ऑल्सो published the newspaper Janata and Prabhuddha Bharat. Next, maps and drawings. So again map लिखी हुई चीज़ होती है, printed चीज़ है. Drawings is again a printed thing, so it comes in written source. Map is also regarded as an important source of history. The changing nature of a city or a particular location can be traced through maps. The Survey of India was an independent department established during the British period. So British period में the Survey of India करके एक डिपार्टमेंट था जो अलग से एस्टैब्लिश किया था. Through scientific methods of survey, they have created maps of India, various provinces of India, cities, etc. So हमको सबको पता है कि मैप की इम्पोर्टेंस क्या है. सो सेम वे ये जो मैप की इम्पोर्टेंस अभी है उस टाइम पे भी थी. So similarly, the plan designed by the architects proved important from the view of study of architecture of building as well as phases of development process. Now look students, you can see the बहिष्कृत भारत जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने पब्लिशमेंट जिसका स्टार्ट किया था. You can see the picture of that, how it was. See here, this is it. इस तरीके से वो आता था, ये उसका लोगो था बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर का. Okay, then next page of a particular area. For example, the Department of Mumbai Port
Trust has the original plan of the Mumbai Port. Information about development of Bombay city can be understood through the plans drafted by architects and engineers. So यहाँ पे वही दिया है कि ब्रिटिश के समय में जो भी आर्किटेक्चरल प्लान होता था या ड्राइंग्स होती थी उसका भी रिकॉर्ड किया गया है. जैसे कि एग्जाम्पल यू ऑल नो, ब्रिटिशर्स के रूल में मुंबई वॉज नेम्ड एज बॉम्बे. Later Bombay was renamed as Mumbai. So all the documentation works of Department of Mumbai Port also comes under written sources. So clear with the written source. So we have covered material source and written source. Now we are going for oral source. So it is not much, थोड़ा ही है कि ओरल सोर्स क्या है और उसमें क्या हम देखने वाले हैं. आज हमने रिटर्न सोर्स देखा. रिटर्न सोर्स में हमने न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स देखे, मैप्स एंड ड्राइंग्स देखे. सो ओरल सोर्स में भी हम कुछ सोर्सेज देखने वाले हैं, बट इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो फॉर दैट, if you remember students, I have told you to make a CW notebook for history and start writing lesson number 1, sources of history. So in that, now you will take a new page, write lesson number 1, sources of history, and then in that you will draw this table as return source. This is your today's homework. I want everybody of you to draw this table which is being shown on your screen, that is return sources. Yes. And then in next class we will start with our oral sources. So for today this was your last explanation. Let's meet in our next class with a new topic, oral sources. Thank you.